The NEP 2020 prefers an imaginative and flexible curricular structures with creative combinations of disciplines for study, offering multiple entry and exit points and creating new possibilities for lifelong learning while giving an additional dimension of innovation and industrial utility to the domain of research. With the NEP 2020 setting the expectations bar higher with regard to curriculum and research, we look forward to having an enlightening session. Thank you. Thank you so much, ma'am, for describing the objectives of this workshop in such a settled manner. Now I, with all due regards, request our principal, sir and patron of this workshop, Dr. K. Tandekar sir, to please come on the podium and present his welcome speech. Thank you. शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज से 5 डेज नेशनल वर्कशॉप का आयोजन 5 डेज ऑन ब्लेंडेड मोल्ड सब्जेक्ट है NEP 2020 करिकुलम एंड रिसर्च रिफॉर्म। इस विषय को लेकर 5 दिवसीय यह कार्यशाला का आयोजन आज प्रारंभ हो रहा है। हम सब के लिए, महाविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस महती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सबके आदरणीय सम्मानी मार्गदर्शक डॉक्टर GD शर्मा सर, कुलपति यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के द्वारा आज इस 5 डेज वर्कशॉप का शुभारंभ हो रहा है। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ माननीय कुलपति जी का आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर मुझे व्यक्तिगत रूप से माननीय कुलपति जी का आशीर्वाद सानिध्य हमेशा मिलता रहा है। मैंने इस वर्कशॉप के लिए भी सर से व्हाट्सएप में एक रिक्वेस्ट पत्र भेजकर यह अनुरोध किया था। सर ने महाविद्यालय के प्राध्यापकों के इस निमंत्रण को स्वीकार किया, सहमति दी और आज आभासी पटल पर सर हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत इच्छा है सर का फिजिकल रूप से इस महाविद्यालय में उपस्थिति हो, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिले। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानी GD शर्मा सर का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। आज के इस प्रथम दिवस की ओजस्वी वक्ता, जिनके निर्देशन में मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत 8 स्वशासी महाविद्यालय को केंद्रित करते हुए प्रारंभ हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस वर्ष शुरुआती तौर पर शासन के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने और उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतें परेशानियां हो रही है। माननीय आयुक्त महोदय, सचिव महोदय और डॉक्टर घनश्याम सर का लगातार इस विषय पर केंद्रित फोकस है कि पूरे प्रदेश में ये लागू किया जाए। बहुत से फैक्टर हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने कुछ विषय का चयन किया। अभी कुछ दिन पहले भी आयुक्त महोदय की उपस्थिति में वर्कशॉप हुई, इसके पहले भी हुई। उनके निर्देशन और आदेश के परिपालन में लगातार हमारे प्राध्यापक, मैं सम्मानीय मंच को बताना चाहूँगा कि जब से हायर एजुकेशन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है, समस्त प्राध्यापक उसे
पूरा करने में लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उनके कुशल मार्गदर्शन में ही हम अभी तक इस कार्य को आगे बढ़ा पाए हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस वर्कशॉप के आयोजन का जो बीड़ा उठाया है हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD, उनके सभी प्राध्यापकगण, IPSC की कोऑर्डिनेटर, समस्त प्राध्यापकगण और विभिन्न महाविद्यालय से भी मैडम गर्चा बैठी हुई है, गर्ल्स कॉलेज से, तो प्राध्यापक साथियों और मेरे विद्यार्थियों, यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5 दिवसीय कार्यशाला में आप अवश्य जुड़कर उन सभी विषयों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अंत में समस्त अतिथियों का, श्याम जी का, माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत आभार। महाविद्यालय परिवार सदैव आपके सहयोग का आभारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इस स्वागत उद्बोधन और जो आपने आशीर्वचन हम सबको दिए हैं। Now very humbly I am going to invite the keynote speaker for today, Dr. G.A. Ghanshyam, to express his views on the workshop. We will be having an opportunity to hear him today, where Dr. Ghanshyam will be the keynote speaker and the plenaries directly. I am profusely elated to take an opportunity to invite our chief guest of the day, Professor G.D. Sharma, the Honorable Vice Chancellor, University of Science and Technology, Meghalaya. Professor G.D. Sharma is an eminent academician and has a very successful career in the field of academic field. He had been the former VC of Bilaspur University, founder VC of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, former VC of Nagaland University, and former Pro VC of Assam University. Being a renowned intellectual from the field of life sciences, Sir has been the editor of 7 journals, has around 261 research publications to his credit. He is also the member of different academic societies of the country and abroad. So with great honor, I invite Professor G.D. Sharma for showering his blessings in this inaugural session. Over to Dr. Sharma. Sir, please unmute yourself. Good afternoon to every one of you, and I congratulate the Principal Sir, Dr. K.L. Tandekarji, who is very active, and since joining this government Digvijay Autonomous PG College, Rajnandgaon, he has been very active in organizing various academic activities, a number of seminars, workshop, training, and the IPSC under his leadership is very active. And in this 5 days national workshop on NEP 20, which is starting from today till 21st, on curriculum and research reforms, where IPSC has planned a number of experts from different streams, from different universities, different colleges from all over India. A number of honorable vice chancellors are invited, like Professor R. Sridhar, honorable vice chancellor of Rajnandgaon University. And I must mention here that Dr. G.A. Ghanshyam, a very active person who is now
taking care of as a OSD, Government of Chhattisgarh in education. He has also motivated number of colleges and helping continuously even universities that how our academic standard of Chhattisgarh can be enhanced. With the result, Chhattisgarh has emerged excuse me, as one of the most developing state in India and who has gone for assessment and accreditation by NEP as one of the first state which was lagging much behind. That indicates the potential in our colleges and universities and the faculty which has so much knowledge to share, help each other, and also mainly concerned about the quality. In that sequence, this workshop on NEP 2020, particularly related to curriculum and the research, is very important. And in this, especially Dr. Neelam Srivastava, the organizing secretary, and the convener Dr. Amita Saha and Dr. Anita Shankar, both of them have planned very nicely that how the participant can get maximum benefit out of this workshop. Here, what is more important is that NEP 2020, which is the first education, national education policy of 21st century, is the outcome of the largest participation of the stakeholders. The views taken from grassroots level to experts from India and abroad have given rise to, for the first time in the history of our country, that how the transformative education is required to take India again to the highest level of quality of education, which can create wisdom and can develop confidence among the youths. And how to prepare our youths for the future requirement of the nation and the world as a whole, particularly related to the new areas which are emerging, both in technology, a different kind of the jobs or employment required, whether they can be made prepared or not. And in this future or their visionary national education policy 2020 has come to play an important role. This will give a more opportunity to our youths also to break the hard the divisions between arts, science, commerce, then vocational education, then general education, then unitary to multidisciplinary. All these boundaries have been removed. So the youth will have more opportunity to become more creative, to be a very serious contributor, and also to go for the solving the solution, bringing the solution of the problem, especially of the society which is emerging, developing very fast,
And therefore, what is required is the content which we have so much in any area are to be liberalized. That means these contents have to be reduced, and these contents have to be given scope for choosing as a choice by the youths, that they can intermingle the knowledge from any branch, whether it is related to curricular or extracurricular or even other activities, so that it can become the part of their learning. And therefore, the pedagogical changes have to be brought under such category that is more flexible, as well as they can integrate the knowledge from any source. So giving so much scope of learning to the youths of our country, it requires a huge change in our infrastructure, in giving training to our teachers, and also bringing change in our mindset. Because we have been so far giving our knowledge to the students mostly bookish type, preparing them only for exam, and therefore they are finding difficulty in getting job. Industries today, they say only 10% graduates are employable. That means 90% graduates who are coming out with the degree, with good marks, everything, but they are not having that skill to meet the requirement of the industries. As we see that now industries or the new business which are created, they are towards the solution of the society's problem. Therefore, the curriculum has to be now more flexible, multidisciplinary, also incorporate all those aspects related to the vocational, skill, extracurricular activities. So how to go about it? Because our regulatory bodies, so far, they allow us the model or modular curriculum where 20 to 30, maximum 30% contents can be changed. After this, NEP 2020, the UGC, AICT, they have come forward that students can be given choice up to 40%, so that they can choose any subject. When this basic change is required, that means the curriculum has to be in such a manner framed that it has scope for bringing 40% courses as per the choice of the student, both for external students as well as for internal students who go to any other scope where maybe internship may also be there, maybe project or expedient learning is a part of this, or it is also a new skill, or like sports or like social activities, social studies. All these things are to be incorporated in our system. So that suppose a political science students want to go for this now computer course. So whether computer science department has made a school for non-computer science students, so that they can learn the language, they can learn this application of language,
they can also learn how to use this language to make the program. All these things can be incorporated so that the student basically learning the political science or the core subject of this particular subject can apply this, so he can think or he can also plan the application part, which is not existing in our present system of the education. So that means NEP 2020 provides more creative teaching learning, more innovative, and therefore the research becomes very important. Now when we are opening so much scope for the youth, the question comes whether our colleges, our universities are ready to provide such. So we may think that a lot of infrastructure is required. That means in terms of physical infrastructure, laboratories, then equipments, etc., related to particular education. And it may not be possible to provide all kinds of the choices which may be required by the students. The other thing in mind comes that it could be possible to share our resources, both in terms of physical as well as in terms of academic. So when we come to the sharing, naturally, the sharing may be based on two aspects, either as a collaborative or paying the fees. So paying the fees, extra fees, may be extra load on the students, and therefore it may not give the free flow of the knowledge or free movement of the students. When we say movement, that does not mean only physical movement, but it may be online or in blended mode, because we must take the corona in a way that our country has progressed 10 years much faster ahead in terms of learning technology as well as in application of technology. So we can get the knowledge, we can share the knowledge by using this technology which is growing in our country very fast, because now 3G to 4G, 4G to 5G is coming, so very fast movement of downloading, and particularly the open educational resources which are available, that access can be made. So this will help to have the access to the quality knowledge of the subject, which is required by the students. A number of alternative platforms like MOOCs, Portal, or NEP or CEC or IGNOs, and now our own Indian platform is coming up. For the time being, it is being used mostly by our government agencies, and I am sure that like Google and other things, we will have our own Indian platform also, so that our knowledge can also, or the data of knowledge cannot be accessed by other countries also. Because now we are using the Google and this platform, so our knowledge or data is being shared, or it is not confidential. So in future, I am sure that this will also, particularly the innovation when we are growing and we are adding, this is giving opportunity to our colleges also to create new knowledge and also to register as intellectual property right and go for patent. Earlier in our educational systems, we were not
much concern about the patent and other things, because we were only more concerned about the completion of course and conducting exam, that to the annual exam. So now the NEP 2020, which is a basic concept, is on the learning, creating the more aspects of critical thinking in a student. And when we say critical thinking, means related to the problem solving attitude. And when we say problem solving attitude, that means he has to learn some skill. And this skill may be soft or hard or this one. So therefore, those vocational institutions also have to cope it. And NEP 2020 allows to go for professional or vocational, combining with the general or academic education, and therefore bringing the best quality of the education. So that means the student will get more opportunity to have the access to the quality education. Now question comes, how to have this approach? So since NEP 2020, now many universities, many states, they have already implemented from school to the higher educational institutions. At school level, they have brought a number of changes, particularly bringing preschool education, giving training to those social workers, making them technology aware, and this NCRT has been very active in this. They have also developed the material for the early learners and also skill education bringing at the school level, and therefore continuous assessment has been brought in the school also, particularly in class 9, 10, 11, 12, which was not there earlier, means only board exams. So in this way, the bringing of this knowledge how to have continuity with higher education. Recently, the National Credit Framework has been brought into reduced by the high level committee constituted by both the UGC and also the Council of the Vocational Studies, and now it advises that how we can map the credit and incorporate the credit. So the basic thing comes that first of all we have to bring our educational part into credit work in terms of hours, and therefore this makes easy to understand and implement. Not in terms of the course which was not having number of hours assigned to topic. So some of the topics were taught very long duration, whereas the student does not need such duration. Some of the courses or topics were even not taken care. Therefore, the gap was there between those expertise or the knowledge required both in terms of curricular aspects and the knowledge which was needed by the students. So this gap is now narrowed down and is given chance to the student to select these courses from different fields. Therefore, we have now opportunity for the students to become the multidisciplinary and also
to be more flexible education, taking part of the technology and having access. So that indicates that how research could be multidisciplinary. So recently we were just seeing now the change, the regulation 2022 UGC has brought for the PhD scholars. They have allowed these aspects also, that the course work which is to be done, this can also be multidisciplinary and can be flexible to complete the contents in methodology. They can have the course or the combining two institutes. So when we say the sharing of this knowledge for combining this, that means the basic thing comes, the creating understanding between the two institutes. Particularly, we have so many national institutes which have facility, which can also create now the curriculum or contents for providing as input in the form of credit, which can be taken by the students. The another thing, the credit formulation is required for the sports, and sports universities are particularly can be approached. Similarly, the universities which have music and other things, they can also be approached for making credit course for those who are not having basic knowledge of those, and to provide to the non-sports or non-music academicians for the general education, so that they can create a combination of the knowledge, and we can say they will be more innovative. So I am sure that this NEP 2020, besides providing opportunity for access, equity, quality of education, and also become more affordable because of sharing of knowledge, and also to provide more basic infrastructure, because each institute can have specialized knowledge or specialized subjects which can also offer to its own students as well as to the students of other institutes. And therefore they can invest more money in creating such specialized knowledge in their own institute. They need not to repeat the same, because here sharing and collaboration is going to play an important role in enhancing and proper utilization of our resources. So what is required is that the change which is required now by NEP 2020, which also seeks not only to enhance GER or not only to enhance the numerical access to the education, but also to enhance the quality education in relevant needed area, so that we prepare the youth for the visionary development of new industrial areas. So what is required is that in such areas we see that now the artificial intelligence is emerging as one of the fastest growing area in everything. So how the fastest growth can be matched with our education system? Now we see a number of platforms like chatbot has emerged. So how it is synthesizing the data and providing when to solve any question as a solution
But is it the quality approach? No. It can only be based to provide the information, not the knowledge. So for getting knowledge, we need teachers who are having the expertise knowledge. Also they can have this knowledge dissemination. So when we bring this aspect, that means teachers training is required to become more pedagogical experts in learning those technology which also and also platforms, whether it is related to chatbot or this, so that they can go above that in imparting the knowledge to the student. Otherwise, if we are not keeping ourselves up to date, then the students will only learn superficial, getting information from examination point of view, and many absentees will be noticed in class. So this is another challenge for us provided by NEP 2020 to keep update our teachers, to continuously train them, and also to provide the new areas which are emerging with the knowledge. And therefore, they will be able to create new ecosystem of knowledge, new ecosystem of pedagogy, and also we can say our youth could be made global youths where they can become a partner of solving the problems, not only of our local or regional problem, but also the global problem. And then only we can say that India can emerge as Vishguru when we are talking. That means India can also provide, our youths can provide the solutions to the world problem. They can provide those area of knowledge where there is no information available so far. So I am sure that this approach in research, particularly of multidisciplinary, in more innovative in problem solution, will be required now, and we need to share and collaborate with institutional happening both at national and international to scientific to more functional, and also to provide training internship at least of 1 semester in different industries, and also to share the skill at different level. So with this technological advancement, the teachers who have to have both formal and informal education as a part of curricular aspects, this will require to impart for the holistic development of the students. Not only a very narrow area of the subject or the content, and reducing the contents level, the amount, to incorporate the practical or experiential interactive part of the teaching, so that they can be given small problems. They may be asked to write down at least 5 problems which they notice of society or their area, and also give this project to bring this for this. And each batch can bring the updates or the addition to these solutions. And therefore, this will remove the hard separators which have been created between science, arts, and also between vocational and academic streams, or between the curricular and extracurricular activity. And therefore, this will also give opportunity to our youth to utilize their full potential for learning, as well as
applying this learning to the problem. I am sure that autonomous college. But less research in this, but in autonomous colleges we can have a balanced approach towards teaching, having more research because they can modulate, they can create their own curriculum for the students, they can give more flexibility for the students, they can provide the opportunity to select only the teacher, a mentor is or coordinator is required to help them if there is any problem. So I am sure that this 5 days workshop, the experts will bring more about these aspects of curriculum development because now the trainings are being organized, how to create the relevant contents and also that how we can apply in our educational institutions to enhance the quality of the higher education. So thank you very much for giving me this opportunity and to also allow me to share some of these aspects of NEP 20 because we have already implemented here in our university NEP 2020 and we are getting a very positive result. I may just share that earlier each department they were having elective 3, 4 and we always had the limitation of the number of teachers. Some of the electives where we were not having expert teachers, we were unable to provide to the students. But now we are providing any number of the elective required by the students, but what we are doing, the elective which we are not having in our university, we are allowing that student with the university or with the research institute where that elective is available. And therefore the students can complete, the assessment is done by that institute, he brings this and their mark sheet here, we incorporate and that is how the academic bank of credit we are maintaining, we have registered, we have given this opportunity to our students also. Those who want to go outside our university, they can register on this Ministry of Education on this academic bank of credit and inform our university, the examination branch, so that their full detail is maintained. So the students' interest is increasing, what we have seen, and the students from social sciences, they are opting for the physical science courses. The physical science students from hardcore physics and others, they are opting some sociology courses or social work courses. So it is a new experience for us also. We did not think earlier that how this interdisciplinary or transdisciplinary knowledge will be shared by the students or what they want to learn also. So their interest now is being taken care, and I am sure that slowly in coming years more better understanding of NEP 2020 as well as our transboundary of institutional will also be reduced, and that will be mainly having more collaborative kind of learning. So that's what I feel. So thank you very much, Dr. Rajnandgaon ji, and also your whole team, and Dr. Ghanshyam ji for helping all our their Chhattisgarh Institute to overcome any hindrance in higher education and bringing the
different parts of the country. Thank you very much and namaskar. Thank you so much, sir, for giving a detailed synopsis of New Education Policy 2020. And you very truly said that only bookish knowledge cannot produce the stuff that we need for the growth of our country. We need multidisciplinary approach as well as vocational education to produce the students that will make our country Vishwa Guru. Thank you so much, sir, for this brilliant deliverance. Now we wish to felicitate our chief guest, Professor G.D. Sharma, sir, with a memorial. And for that, I invite our principal, Dr. K. Tandekar, sir, to present him the memento on screen. So this is for the honor we wish to give you. Thank you very much for giving this, sir. We are honored, sir. Now, for the vote of thanks of this inaugural session, I invite Dr. Rajnandgaon Goswami, Professor in English. May I now call Dr. Anita Saha to present vote of thanks. I think Aradhana Goswami should be here. Please, Aradhana Goswami. Good afternoon, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure and honor to deliver the vote of thanks for the event to all the dignitaries assembled here today. At this juncture, I would like to quote world-famous Roman philosopher Cicero, who well said that gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. First of all, I thank our today's chief guest, Honorable Vice Chancellor Professor G.D. Sharma sir, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion virtually. Thank you, sir. My sincere thanks to our principal and patron of this workshop, respected Dr. K. Tandekar sir, who has always been very supportive and inspiring to our initiatives and encourages us to strive for excellence. I like to express my appreciation to convener and HOD of English Department, respected Dr. Anita Shankar ma'am, IPSC coordinator, Dr. Anita Saha ma'am, and organizing secretary, respected Dr. Neelu Shrivastava ma'am, who chose this relevant topic for this workshop and handled the event throughout. My special thanks to all the respected members of the different committees and all the teaching fraternity assembled here. I would be failing in my duty if I did not thank to all the students and esteemed participants in online and offline mode from different parts of country. I thank all the volunteers, media persons, and non-teaching staff who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. Swami Vivekananda has well said that, arise, awake, and stop not till the goal is reached. So the journey of this 5-day workshop has started successfully, and I hope it will prove a milestone in the history of NEP seminars organized not only in Chhattisgarh but all over the country. Thank you so much.
Dr. Aratma for presenting your facts. Now we are moving ahead and going to start our plenary session for today. And our keynote speaker is Dr. G.A. Ghanshyam sir, OST, SLQAC, Higher Education, Government of Chhattisgarh. Dr. G.A. Ghanshyam sir doesn't need any introduction. As we all know, he is a towering figure not only in English fraternity but also in activating NAC in our state. He is an eminent scholar and professor in English. He has an accreditation and recognition by the International Accreditation Organization USA. He has 84 papers published in various international and national journals and edited books. He has authored 2 books and edited 5 books. He is a research guide and 10 scholars have been awarded doctorate degree under his supervision. He was selected by Rotary International to represent India in England for a month in 2005 under Group Study Exchange Program. So, with due respect and much joy, I invite Dr. G.A. Ghanshyam sir for his keynote address. His talk will be on "Need Must Match the Need." That is the topic of his talk, and I'm sure we all are going to be benefited with his lecture. So over to Dr. Ghanshyam. Thank you very much, Dr. Neelu Srivastava, for a wonderful introduction, which I don't deserve at all. मेरी आवाज आ रही है आपको? महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तांडेकर जी और इस NEP 2020 पे आज आयोजित इस कार्यशाला के समस्त आयोजक, इस महाविद्यालय के सभी प्रबुद्ध प्राध्यापकगण और सबसे ज़्यादा आप सभी विद्यार्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यदि बात करें तो राष्ट्र की बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें रहने वाले लोगों को हम जागरूक न करें। राष्ट्र तब तक निर्माण नहीं हो सकता जब तक उसमें रहने वाले जो युवा हैं उनमें वो ताकत, वो ऊर्जा, वो चेतना, वो आभा, वो प्रभा न भर दी जाए, ताकि एक समृद्ध, सशक्त और समर्थ राष्ट्र की हम परिकल्पना कर सकें। और इसलिए शायद चाणक्य ने कहा था कि निर्माण और प्रलय जो है वो शिक्षक की गोद में पलते हैं, न केवल शिक्षक के गोद में पलते हैं। और यदि चाणक्य यदि है तो वो चंद्रगुप्त के कारण है, और यदि चंद्रगुप्त का वजूद है तो वो केवल और केवल चाणक्य के कारण है। तो इसीलिए सिक्के के 2 पहलू में यदि एक पहलू शिक्षक होता है तो दूसरा पहलू उसका विद्यार्थी होता है। इसलिए सिक्के को आप जब भी उछालें, यदि हेड भी आता है गुरु तो टेल में उसका स्टूडेंट होता है, और यदि टेल आता है तो उसके हेड में वो टीचर होता है। तो इसीलिए टीचर का जहाँ तक तात्पर्य है, गुरु का जहाँ तक तात्पर्य है, जब हम लगातार बात कर रहे थे गुरुकुल की, और शर्मा जी ने भी कहा कि हमें गुरुकुल परंपरा की ओर जानी है। भारत की शिक्षा नीति और भारत की शिक्षा पद्धति मानी ये जाती है कि पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन यदि शिक्षा पद्धति किसी देश में पाई जाती थी तो वो भारत था। और इसलिए भारत में गुरुकुल परंपरा की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर बैठ के सारे शिष्य उस गुरु से सारी दीक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए हम दीक्षा की बात करते थे। हम एजुकेशन में कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं, लेकिन कभी हम विजडम की बात नहीं करते। हम हमेशा बात करते हैं ज्ञानार्जन की बात करते हैं, और जब हम ज्ञानार्जन की बात करते हैं तो हमारे शिक्षकों की क्या आवश्यकता है, जब हमारे पास प्रोफेसर गूगल और डॉक्टर विकिपीडिया। यदि आप मुझसे सारी चीजें पूछे तो मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊंगा जितना कि प्रोफेसर गूगल और डॉक्टर विकिपीडिया दे सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करना चाहिए, किस तरीके से उसका सटीक उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हमें अपने लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो एक बात यदि कोई बता सकता है तो वो हमारा टीचर होगा। क्योंकि इस इंद्रजाल में या माया जाल में, जिसको आप इंटरनेट कहते हैं, उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाए,
कौन से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब किया जाए, कौन से इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया जाए, कौन सा इंफॉर्मेशन जो है वो इनोवेटिव है, ये तय करना और इसको अमल में लाना, ये निहायत शिक्षक की भूमिका होती है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वह शिक्षा नीति है जो आपके नीड और डिमांड के आधार पर तैयार की गई है। आपकी ज़रूरतें क्या है, आप क्या क्या चीज़ें डिमांड करते हैं, उस डिमांड का यदि हम यहाँ पर नहीं दे पाते हैं, सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सप्लाई चेन जो है वो टूट जाता है। इसलिए कॉमर्स में हम कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों का एक चेन होता है। यदि डिमांड जितनी आएगी उतना ही सप्लाई होगा, और सप्लाई उसी बेस पर निर्भर करता है कि जिस बेस पर और जिस क्वांटिटी में, जिस फ्रीक्वेंसी में लगातार डिमांड आ रही है। इसीलिए आज का जो स्लाइड बढ़ नहीं रहा, दूसरा दे दो। ये ले। हो गया। आपका वो यूएसबी पोर्ट ठीक है क्या? पोर्ट बदल के देखो। सर पोर्ट आई थिंक खराब है। पोर्ट खराब है? हाँ आई थिंक। तो आप ऐसा करिए ना, मेरे पीपीटी को आप कॉपी कर लीजिए, जहाँ पेन ड्राइव लगा है वहाँ एक सेंसर लगा दीजिए। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि नीड मस्ट मैच द डीड मस्ट मैच द नीड। डीड मतलब होता है हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य। हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है वो आपके नीड को मैच करना चाहिए। आपकी ज़रूरत है कि आप स्किलफुल इंडिया चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है कि आप स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरियां मिले, क्योंकि पढ़ाई करना किसको बुरा लगता है जब नौकरियां मिलने लगे। और यदि उस पढ़ाई को करने के बाद भी यदि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, हम एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है, या हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की पद्धति में कोई ना कोई खोट ज़रूर है। हमारी अब वो शिक्षा पद्धति नहीं रही जहाँ केवल हम थियोरेटिकल नॉलेज ले लें, बल्कि अब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। यदि हम बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, या उसके बाद स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम बाजार में खड़े होते हैं तो हम एक लेबर जो है उसके सामने भी अपने आप को असहाय पाते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं होता है। हम उसके जैसा मेहनत नहीं कर पाते हैं, हम उसके जैसा कभी रमदा नहीं चला पाते हैं, हम किसी कॉबलर के जैसा वो जूते को सील नहीं पाते हैं, किसी दर्जी के जैसा किसी कपड़े की सिलाई नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे ओकेशंस हैं जहां पर हम अपने आप को निहायत कमज़ोर मानते हैं। और यदि आप डिग्री की बात कहें तो हो सकता है वो जो जूता चप्पल सील रहा व्यक्ति हो वो भी डबल एमए हो, ये भी हम नहीं जानते। जो ऑटो चला रहा है पता चला वो भी साइंस का ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये भी हम नहीं जानते। न जाने कितने लोग ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा पद्धति यदि इस तरीके से हुई तो इसके कारक भी हम ही हैं, क्योंकि यदि इतना बढ़िया और सोने की चिड़िया जैसी वाली शिक्षा पद्धति यदि हमारी रही और वो धीरे धीरे ह्रास होती गई, तो उस ह्रास के कारण में दोनों लोग आते हैं, सिक्के के दोनों पहलू उसके लिए कारण है। इसीलिए लगातार बढ़ती हुई हमारी शिक्षा पद्धति में ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले ने उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की, और उसने पूरे तरीके से उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास किया। और वो इसलिए किया कि यदि किसी के देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है
तो जरूरत है कि उसकी शिक्षा पद्धति को पूरे तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो कभी भी उस तरीके से उभर ना पाए जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई, ताकि आने वाली हर पीढ़ी उस बमबारी के अटैक पे रहे और उससे उभर ना पाए। ये अलग बात है कि जापान ने तुरंत पलटी मार के उभर कर एक दूसरे विकासशील देश में या विकसित देश में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें क्यों इतना लंबा समय लगा? हम क्यों इतना पीछे रह गए कि हमारी शिक्षा पद्धति, जहां पर हम लगातार ऋषि मुनियों की संतान की शिक्षा पद्धति का लगातार लाभ ले रहे थे, तो हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसी क्या बात रह गई? हो गया मैडम कि हमारी कॉपी कर लिए क्या? सेंसर लग गया। We are happy to see that tomorrow's speaker, Dr. Banik, is with us online. We welcome Dr. Banik in this workshop. ये नहीं हो रहा है सर मैनुअल कर लो। हाँ मैनुअल कर दीजिए, चलिए मैनुअल कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। हो रहा है मैनुअल? हाँ बैक में जाइए, बैक 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 बैक। सो जो टॉपिक था वो था कि डीड मस्ट मैच द नीड। हमारा टॉपिक यहाँ पर है करिकुलम एंड रिसर्च रिफॉर्म। करिकुलम होता क्या है? हम जो बीएससी में, बीकॉम में या फिर बीए में या फिर हमारी स्नातकोत्तर उपाधि में जो हम पेपर पढ़ते हैं या जो कोर्स पढ़ते हैं, उसके अंदर के कंटेंट जो है वो हमारा करिकुलम है। वो जो करिकुलम जिसको हम पढ़ते हैं, क्या वो करिकुलम हमारी आज की ज़रूरतों के हिसाब से है? यदि मैं कहूँ नहीं तो आपको भी आश्चर्य होगा, और यदि मैं कहता हूँ नहीं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने यदि एमए पास किया 1989 में, तो मैंने जिन जिन ऑथर्स को पढ़ा था उसमें से कुछ ऑथर्स को हटा दूं तो आज भी वही ऑथर्स हैं, और वो मेरा 1989 या 90 का नोट्स आज भी मेरे काम आ रहा है। मैं कोई कोर्स में बदलाव अभी तक नहीं देख पाया, या आमूलचूल परिवर्तन जिसको हम कहते हैं वो नहीं देख पाया, जबकि हम कहते हैं कि जमाना लगातार बदलता चला जा रहा है और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और वो लगातार बदलते रहना चाहिए। तो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है कि हमारी शिक्षा पद्धति पास्ट की शिक्षा पद्धति है, जिसको हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं और फ्यूचर की जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। तो यदि शिक्षा पद्धति पास्ट की प्रेजेंट में फ्यूचर के सिटीजन को तैयार करते हैं, तो वो फ्यूचर कैसा होगा? वो वाइब्रेटिंग इंडिया कैसा होगा? वाइब्रेंट इंडिया कैसा होगा? या जिस भारत की परिकल्पना हम 2030 की अब्दुल कलाम ने की थी, वो भारत कहाँ जाएगा? तो इसीलिए जरूरी है कि हमारी शिक्षा पद्धति में हमको 3 चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए एनरिच द माइंड। एक शिक्षा पद्धति ऐसा हो जहां हमारा माइंड जो है वो अपने आप को एनरिच फील करे। आप यदि इस कक्ष से बाहर निकले तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, फूड फॉर थॉट मुझे मिला है, मेरे दिमाग को कोई ना कोई चीज ऐसी मिली है जिस पर मैं बार बार चिंतन मनन कर सकता हूँ। दूसरा है वार्म द हार्ट। मेरे हृदय को भी लगना चाहिए कि हृदय और दिमाग, इन दोनों के बीच में एक तादात्म्य स्थापित होना चाहिए, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि आपका हार्ट भी कहे कि नहीं, ये चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। और तीसरा है अवेकन द स्पिरिट। आपके अंदर की जो शैशव अवस्था में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम कैसे आगे ला सकते हैं और पूरा का पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं एनरिच द माइंड की, तो एनरिच द माइंड के लिए नेक्स्ट क्या हो गया? एनरिच द माइंड के लिए नॉलेज होना चाहिए। मैंने इसलिए आपसे कहा था शुरू में, ये प्रोफेसर गूगल और डॉक्टर विकिपीडिया आपको नॉलेज नहीं देते, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। नॉलेज का मतलब क्या होता है हिंदी में? ज्ञान। और ज्ञान कौन दे सकता है? गुरु दे सकता है। तो इसीलिए हम गुरु की परिकल्पना करते हैं, हम टीचर की परिकल्पना नहीं करते। हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान वो है जो इंफॉर्मेशन के 2 लाइन के बीच में जो सफेद दिखाई दे रहा है उसमें से कोई चीज निकाल के दे दे, वो ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइंस। 2 लाइन के बीच में जो छुपी हुई चीज है वो यदि उभर कर बाहर आ रही है तो वो ज्ञान है, और वही आपका रिसर्च है।
रिसर्च का मतलब होता है फिर एक बार सर्च करना। सर्च उसको करना जिसको शायद दूसरे लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें उन चीजों को देख पा रही हैं, इसलिए हमें नॉलेज करने की जरूरत है। दूसरा, वार्म द हार्ट। वार्म द हार्ट के लिए हमको फीलिंग्स चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति केवल एक ही को केंद्रित करके बात करती है, वो है हमारा इंटेलिजेंट क्वोशंट। आपके बच्चे को कितना परसेंट मिला? 99.9। आपके बच्चे को कितना मिला? 95। आपके बच्चे को कितना मिला? 80। आपके बच्चे को कितना मिला? 54। हम हमेशा बात किस में करते हैं? परसेंट में। हम हर बच्चे को तौलते हैं उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर। हम ये कभी बच्चे को नहीं तौलते कि बच्चा कितना पोटेंशियल है बच्चे में, वो पोटेंशियल उसके अंकों के आधार पर हम नापते हैं। मतलब हम इंटेलिजेंट क्वोशंट को नापते हैं, लेकिन बाकी सारे क्वोशंट सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं। फिर उस शिक्षा पद्धति का मतलब क्या है जहां बाकी क्वोशंट, जिसमें इमोशनल क्वोशंट होता है, सोशल क्वोशंट होता है, रिलीजियस क्वोशंट होता है, साइकोलॉजिकल क्वोशंट होता है, उनका कोई यूज ही नहीं। आप जिस पप्पू को कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है और किसी के यहाँ कुछ डेथ हुई तो काठी में बांस लाने का काम कौन करता है? वही पप्पू करता है। वो 90% वाला नहीं आता, वो तो पढ़ना है करके गायब हो जाएगा। यदि पैरा लाने का काम है, कंडा लाने का काम है, तो वही पप्पू करता है। यदि गैस का सिलेंडर आपको बदलना है और उसको लेके जाना है तो वही पप्पू काम आता है। आपका खुद का बेटा या खुद की बेटी भी आपके साथ नहीं आएंगी। वो किसी काम का जो नहीं है, वो आपके बहुत काम का आता है। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। उसमें भले आप जो चाहते हैं वो इंटेलिजेंट क्वोशंट ना हो, लेकिन उसमें साइकोलॉजिकल क्वोशंट होता है, उसमें रिलीजियस क्वोशंट होता है, उसमें इमोशनल क्वोशंट होता है, उसमें साइकोलॉजिकल क्वोशंट होता है। तो हमारी शिक्षा पद्धति इन सारे क्वोशंट को केंद्रित करके बनाई जानी चाहिए थी। फिर अगला है अवेकन द स्पिरिट, कॉन्शियसनेस डेवलप करना। हमारे माइंड और हमारे हार्ट के बीच में एक संबंध स्थापित करना चाहिए। ये नहीं कि माइंड बिल्कुल अलग चले और हार्ट बिल्कुल अलग चले। इसलिए कॉन्शियसनेस हमें डेवलप करने की जरूरत है। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? मैंने आपको करिकुलम बताया। करिकुलम क्या है? करिकुलम कहता है करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट कौन है? जो आपके टीचर है। और टू मोल्ड द मटेरियल, वो आपको क्या करते हैं? मोल्ड करते हैं। मटेरियल कौन सा है? जो आप स्टूडेंट हैं आपको वो मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल। आइडियल क्या है? जो ऑब्जेक्टिव। और कहां आपको मोल्ड करते हैं? इन द स्टूडियो। और स्टूडियो कौन सा है? आपका कॉलेज या आपका स्कूल। तो टीचर क्या हुआ? करिकुलम टीचर के हाथ में केवल एक टूल है। जैसे चॉक एंड डस्टर होगा, या ये प्रेजेंटर होगा, या पावर पॉइंट होगा, वो केवल एक टूल है। लेकिन सारा का सारा जो चीज है वो टीचर के अंदर में निहित है। यदि टीचर चाहे तो वो एक व्यक्ति को किसी भी जगह से उठा के चंद्रगुप्त बना सकता है, या वो चंद्रगुप्त को भी ऊपर से उठा के नीचे तक पटक सकता है, जैसे नंद वंश का पूरा नाश कर दिया। तो एक टीचर दोनों कर सकता है। टीचर किसी व्यक्ति को उठा के चंद्रगुप्त भी बना सकता है, वही टीचर नंद साम्राज्य का पूरा नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में एक टूल होता है। इसीलिए हम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को लगातार एनरिच करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, और सबसे ज्यादा उनको इंस्पायर करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे यह कार्यशाला न केवल आपको एम्पावर करने के लिए है, न केवल आपको एनरिच करने के लिए है, बल्कि आपको इंस्पायर करने के लिए भी है। और जब हम इंस्पायर की बात करते हैं, वो इंस्पायर कह लीजिए, या यहाँ इनोवेशन लिखा है, इनोवेशन कह लीजिए, इंटरेस्ट कह लीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कह लीजिए, जितने भी वर्ड आप IN से स्टार्ट करते हैं वो सब आपके अंदर ही होता है, बाहर कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट भी आपके अंदर है, इनोवेशन भी आपके अंदर है, इंकल्केशन भी आपके अंदर है, इंट्रोस्पेक्शन भी आपके अंदर है, सब चीज इन है। इसलिए विवेकानंद ने कहा था कि आपके अंदर में वो सारी चीजें मौजूद हैं, बाहर में कोई चीज नहीं है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं। बाहर में शांति यदि चाहिए तो वो भी वो आपके अंदर है। वो कहीं हिमालय के पर्वत में शांति नहीं है, वहां भी आप मोबाइल देखते हुए कोई मैसेज बैठेंगे तो वहां क्या शांति होगी? तो इसलिए शांति मेरे अंदर खुद निहित है, इस बात को भी मुझे समझने की जरूरत है। नेक्स्ट मैम, तो व्हाट इज द नीड ऑफ NEP 2020? एक और मैम, एक और बैक। ये NEP 2020 का एक फेमस स्टेटमेंट है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि यदि किसी राष्ट्र को आपको पूरे तरीके से नेस्त नाबूद करना है, तो मैंने कहा था आपको कि वहां के स्टूडेंट्स पे चीटिंग बढ़ा दीजिए,
जो नकल की प्रवृत्ति है, अलग अलग प्रकार के लोग नकल बनाते हैं और अलग अलग प्रकार के नकल के इजाद करते हैं। उस इजाद के तरीके में इनोवेशन है, लेकिन हम उसको पकड़ देते हैं और केस बना देते हैं, कहते हैं कि ये तो बुक हो गया 1 साल के लिए, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी को हम नहीं देख पाए। वो क्रिएटिविटी उसको दूसरी ओर ले जा रही है, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रही है। लेकिन शायद उस क्रिएटिविटी को हम यदि कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी की ओर ले जाते तो वही बच्चा हो सकता था हमारा, कौन बन सकता था? रामानुजन बन सकता था, वही बच्चा हमारा स्वामीनाथन बन सकता था, वही बच्चा हमारा अब्दुल कलाम बन सकता था। केवल बात यह है कि उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं और किस तरीके से उसकी प्रतिभा को आप मैच्योरिटी में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के हाथ में मर जाता है। आप जानते हैं पुल और बिल्डिंग सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियर हमने वैसे बना के रखे हैं। ह्यूमैनिटी जो है, जितने हमारे धर्म के गुरु हैं, उन सारे के सामने ह्यूमैनिटी अपने आप मौत में आ जाती है। और जहां तक आप बात करते हैं जस्टिस की, न्याय की, वो न्यायाधीश के सामने वैसे ही कमर तोड़ देती है, क्योंकि कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ नेशन। तो इसीलिए एजुकेशन कभी कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक है जिससे ये सारे प्रोफेशंस बनते हैं। यदि डॉक्टर भी बनता है तो एजुकेशन से, इंजीनियर भी बनता है तो एजुकेशन से, रिलीजियस स्कॉलर भी बनता है तो एजुकेशन से, जस्टिस भी बनता है तो एजुकेशन से। तो इसलिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए? एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, 2 स्टेटमेंट थे उसके, एक ये था टुडेस एजुकेशन इज फेल्ड टू रिफॉर्म द ह्यूमन बिहेवियर, और दूसरा कहता है विद इंक्रीज ऑफ लिटरेसी लेवल देयर इज डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन द सोसाइटी। लगातार जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज है वो हमारी सोसाइटी में डिटेरियोरेट होती चली जा रही है। हमारा इम्पेशेंस बढ़ता चला जा रहा है। हम अब पेशेंट हमारे पास रहा नहीं। कोई भी बच्चा हमारे सामने कुछ बोलता है तो हम भी तैश में आ जाते हैं, और पेशेंस हमें नहीं रहा। इसीलिए एक रिफॉर्मेशन की जरूरत थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जाए, भारत की शिक्षा पद्धति बनाई जाए, भारत के लोगों को शामिल करके बनाई जाए, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के हितार्थ ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जाए जिसका हमने निर्माण ये नेक्स्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किया और कैबिनेट ने जिसको अप्रूव किया। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमारी क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो सिस्टम है वो पुराना था, आज हम पढ़ा रहे हैं आगे आने वाले सदी के लिए, तो हमारा माइंडसेट जो है वो 19th सेंचुरी का है। हम 20th सेंचुरी के प्रोसेस में हैं और 21st सेंचुरी का सिटीजन हम बनाना चाह रहे हैं। और हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स बड़े कम हैं, और उनमें भी ये है कि पॉलिटिकल विलिंगनेस कहीं कम है, और एजुकेशन को उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता है। और जहाँ तक कैप्चर करने की बात है ग्लोबल टैलेंट का, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहाँ से पढ़े लिखे लोग आज बड़े बड़े पैकेज के तहत बड़े बड़े मल्टीनेशनल में दूसरे कंट्रीज में आ रहे हैं। पढ़ना यहाँ से है, नौकरी वहाँ करना है, क्योंकि वहाँ आमद ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ से लगातार ब्रेन जो है वो ड्रेन होके चला जा रहा है। और हर माता पिता को अच्छा लगता है कि उसका बेटा यदि स्टेट्स में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो, तो ज़्यादा उनका सीना जो है वो 56 इंच का हो जाता है बनिस्बत इसके कि बेटा बेंगलुरु में है या दिल्ली में है या मुंबई में है या कोलकाता पे है। वो बेटा जो वहाँ है वो कुछ भी हुआ तो आने में कितना समय लगेगा। तो हमने कौन सी शिक्षा पद्धति ऐसी बनाई? फिर लैक ऑफ इंक्लूसिव पार्टिसिपेटिव कल्चर। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है जो वर्टिकल आपको ऊपर की ओर ले जाती है, वर्टिकल ग्रोथ देती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं देती। और यदि ग्रोथ की जरूरत है तो दोनों तरीके से होना चाहिए। आप मकान केवल ऐसे नहीं बना सकते, मकान आपको नीचे भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ आपको वर्टिकल ग्रोथ भी करना पड़ेगा। फिर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम कहते हैं कि इंडिया सेंट्रल एजुकेशन। आज हम बात करते हैं CBCS की, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में विदेशों से आया हुआ है। और विदेशों से इसलिए आया, जहां विदेशों में यदि एक क्लास में जाइए तो मुश्किल से 12-15 स्टूडेंट होंगे। वहां टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो होगा वो 1 के अनुपात में 15 होगा। एक टीचर 15 बच्चे, एक टीचर 12 बच्चे। और हमारे यहाँ देख लीजिए, एक टीचर और 250 बच्चे, एक टीचर 350 बच्चे। और जो जनरल इंग्लिश पढ़ाते हैं या जनरल हिंदी पढ़ाते हैं उनके यहाँ एक टीचर 350 बच्चे।
तो यदि 350 बच्चे एक साथ यदि हल्ला कर रहे हो तो वो टीचर उनको चुप कराने में यदि जोर से आवाज लगाए तो अगले दिन आपके महाविद्यालय में छुट्टी हो जाएगी। राइट? तो ये हमारी उस तरीके की, तो हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अपने महाविद्यालयों में कैसे लागू करें। नेक्स्ट, तो इसीलिए ये जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है वो हम 2020 में ले आए, और 2020 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये था कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। यदि हमारे जूते पहनने की क्वालिटी बढ़ गई है, पहले 100-150 रुपए के जूते से होता हुआ हमारा जूता यदि 1000, 2000, 3000 के जूते में चला गया, पहले 100 या 150 रुपए की शर्ट जो थी वो आजकल हमारी 500-600 रुपए मीटर की शर्ट में बदल गई। हमारा पहले जो जीन्स था वो 200-300 रुपए के जीन्स से आज यदि 2599 का जीन्स हो गया, और हमारे खाने वाले चावल की क्वालिटी बढ़ गई, घर में सोफा की क्वालिटी बढ़ गई, घर में एक्वेरियम आ गया, घर में एसी आ गई, और घर में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्यों नहीं एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। ये डिमांड हमारी नहीं है, ये डिमांड स्टूडेंट्स की है। यदि हमारे हाथ में आने वाला मोबाइल पहले 5000 का था, तो आज हमारे हाथ में 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 50, और सैमसंग और एप्पल ले लीजिए तो 80,000 90,000 का मोबाइल हमारे पास है, जिसकी क्वालिटी और जिसकी पिक्चर क्वालिटी और जिसका पिक्सल आप देखें तो वो बहुत शानदार है। तो क्वालिटी वहां जब बढ़ रही है तो क्यों नहीं एजुकेशन में क्वालिटी बढ़नी चाहिए। इसीलिए क्वालिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में आता है, उस विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास वो महाविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रोग्राम्स और कोर्सेस में नहीं कर पाता है, तो उस महाविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है। यदि मैंने अपने बेटे या बेटी को महाविद्यालय में भेजा है, तो मैं ये चाहता हूं कि उस बेटे या बेटी में जो कुछ भी विधाएं हैं, उन विधाओं का पल्लवन और पुष्पन यहाँ पर होना चाहिए। पल्लवित और पुष्पित होती हुई वो विधाएं एक कलेवर में जब मैंने भेजा, तो मैं चाहता हूं एक पेरेंट के नाते कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ लार्वा इनटू अ बटरफ्लाई होना चाहिए। मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ लार्वा इनटू बटरफ्लाई मतलब आपने यदि एक किसी बटरफ्लाई को देखा होगा तो वो जब पहले किस अवस्था में थी, लार्वा की अवस्था में थी, और जब लार्वा आपने देखा हो तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये लार्वा जो है ये सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो सकती है। तो हर एक पेरेंट अपने बच्चे को एक लार्वा के रूप में अपने कॉलेज में भेजता है, और वो चाहता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी जो है एक सुंदर से बटरफ्लाई के रूप में इस पूरे नीले आकाश में उड़ सके। तो वो हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, और वही होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें फिजिकल भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए, बायोलॉजिकल भी होना चाहिए, केमिकल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स भी होना चाहिए, मतलब भाषाएं भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ का नहीं हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ से कोई प्यार नहीं है या छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाता हूं। मुझे हर उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा से मेरी तरक्की या मेरी उन्नति हो सकती है। यदि मैं ये मानता हूं कि मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, तो मुझे कन्नड़ पर भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना मुझे छत्तीसगढ़ी पे या हिंदी पे या अंग्रेजी पे या अन्य किसी भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। तो जितनी आप भाषाएं जानेंगे उतना आपका कलेवर या उतना आपका व्यक्तित्व का विकास और ज्यादा होता है, और यही हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट है। और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति को अपनाएं जिस शिक्षा पद्धति में आपके सामने वो शिक्षा पद्धति एक सूरज का प्रकाश दे, और आप एक पुष्प के जैसे हैं और आपकी सारी पंखुड़ियां खुल के वो निखर कर आ जाए। इसीलिए इस शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी जरूरत है कि विवेकानंद ने भी कहा था कि हमारा सिस्टम जो है वो होलिस्टिक होना चाहिए, और एजुकेशन जो है वो जितने भी डोर्स हमारे लॉक हैं वो सारे को अनलॉक करना चाहिए। तो ऐसा शिक्षा पद्धति हो जहां आपको नौकरी नहीं भी मिल रही है तो भी आप जॉब सीकर ना होकर जॉब प्रोवाइडर में कन्वर्ट हो जाए। आप खुद ऐसा स्टार्टअप लगाएं जहां आप 4 लोग को नौकरी दे सकें। आप नौकरी के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो नौकरी के मोहताज हैं उन्हें आप नौकरी दे पा रहे हैं, यह स्टार्टअप है। इसीलिए नई शिक्षा पद्धति में हम ये कहते हैं कि हर एक महाविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर खुलना चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर वो है जहां बच्चा यदि प्री मैच्योर बेबी होता है तो आप उसको इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, जहां की ऊष्मा से वो बच्चा जो है वो मैच्योर होता है। यहाँ पर भी विद्यार्थियों में जो भी आइडियाज हैं या जो भी उनके विचार हैं